Hello, viewers, and welcome back to another session of Masterclass on Future and Options Trading. Viewers, हर बार की तरह ये BlinkX Masterclass सेशन भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे सेशन में एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि ओपन बेल से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बहुत कुछ। And for this, I'm glad to introduce our today's Masterclass speaker, Mr. Akshay Bhagwat, Senior Vice President in the Equity Broking Group of JM Financial Services. He has over 18 years of experience in equity markets, skilled in derivative analysis and option strategy. आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। व्यूअर्स, तो हो जाइए तैयार ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी ढेर सारी जानकारी के लिए। वेलकम अक्षय, एंड ओवर टू यू। Good afternoon to all our viewers. Thanks, first of all, for your time. And to start off my webinar, what we started was an introductory session. We had two introductory sessions where we taught you what is derivatives, what are options. हमने आपको पूरा जो है derivatives के बारे में जो education था वो पूरा सिखाया, and we have armed you with all the necessary information and knowledge which is necessary to trade the markets. Now it gets real. आज मैं आपको एक step आगे लेके जा रहा हूँ, which is entering the live market and trading in the live market scenarios and also how you day trade. So when we talk about day trading, the product which we choose is the Nifty index. So today's webinar is entirely directed towards day trading in the Nifty index, how you go about day trading, and what is the best way out. We are not going to confuse you with difficult jargons, terminologies which are used in derivatives. We will keep it as simple as possible. That is the reason we have termed this as an eagle eye approach. Now, let's get our hands dirty, as we say, as we enter the markets and make the best of it. And this webinar comes at such an auspicious time, especially when the Nifty is just 50 points away from its crossing a milestone 18,890 odd levels, which we saw way back in the month of December 2022. So let's start the webinar. So first of all, when I talk about Nifty daily analysis, we are here specifically discussing about using the options route. अभी डे ट्रेडिंग करने में इंडेक्स में अपने पास है दो इंस्ट्रूमेंट, एक है फ्यूचर्स और एक है ऑप्शंस. नाउ यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ऑप्शंस रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ट्रेड करने के लिए. द रीजन बीइंग दैट ऑप्शंस इज अ प्रोडक्ट दैट एज अ बायर योर रिस्क इज लिमिटेड and your profits are unlimited. So if you are positive on the market, you are buying calls. If you are negative on the market, you are buying puts. It gets as simple as this. Make a view, select the right strike. How to go about it is where I guide you. So before you start the day, what we need to understand is a lot of groundwork is needed. बस मार्केट में एंटर करना है 9:15 बजे, गैप अप देख लिया, सब स्टॉक्स भाग रहे देख लिया और तुरंत बाय करने लगे और एक सिचुएशन में आ गए जहां पे अपनी बाइंग से प्राइस अगर नीचे आए तो क्या करना है, वो एक डिलेमा में सब ट्रेडर्स फंस जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम when booking profits, we are very fast to book profits, and in case of loss, we try to hold on to our losing positions. This is the common type of trading pattern which I have noticed in majority of the traders. And I don't say anyone is wrong in this. It is just human psychology working at its best. So my suggestion is, when you start trading in Nifty, how you take your day ahead. First of all, before the opening bells, आपको थोड़ा सा एक ग्राउंड वर्क करना है, एक स्टडी करना है, कौन से पैरामीटर्स देखने हैं फ्रॉम एन ईगल आई अप्रोच इज व्हाट आई टेक यू थ्रू. 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, विच इज 1, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के लिए. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो नथिंग इट्स बेटर देन दिस. अगर टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत है, इट्स प्रॉब्लम फाइंडिंग आउट व्हाट लेवल्स वर्क, देन वी हैव यू कवर्ड. हमारे पास रेडी रेकनर रिपोर्ट है जो रोज प्री मार्केट हम रिलीज करते हैं. उसमें कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल से हम लोग 3 से 4 पिवट लेवल बनाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए.
जो आपको हेल्प करेंगे कहाँ पे सपोर्ट है बाजार में पर डे एंड वेयर इज द रेजिस्टेंस. सो द होल लॉजिक इज आई विल लुक टू बाय एट सपोर्ट एंड आई वुड लाइक लुक टू बुक एट रेजिस्टेंस. दैट इज द होल थॉट. एक एक करके सब पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. बट सेकेंड पॉइंट इज हाउ द एफआईआईज आर पोजीशनड इन ट्रेड. एफआईआईज जो है हॉट मनी करके हम उसको कंसिडर करते हैं और एफआईआई शॉर्ट टर्म मार्केट को डायरेक्ट करता है. ये हम एक कंक्लूजन से चलते हैं हमेशा. ओपन इंटरेस्ट की पोजीशनिंग क्या है डेरिवेटिव्स के ऑप्शन स्पेस में, ये रहेगा तीसरा पॉइंट. एंड लास्टली थोड़ा न्यूज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है. सिर्फ डेटा देख के अगर हम मार्केट में कूद पड़े और पता चला कि एफओएमसी की मीट थी इसलिए मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं आज, तो ऐसे सरप्राइजेस से अच्छा थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर हो या व्हाट्सएप पे. आज इंफॉर्मेशन की आज कोई कमी नहीं है. सोशल मीडिया में जितना अच्छा आपको इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रहा है. सो just keep a track of what is happening. You know, need not be a fundamental analyst, need not understand the economics of the world. It is just basic information to understand आज मार्केट की नस पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी. सिंपल एज दैट. मैं एक सिंपल एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है व्हेन यू एंटर द मार्केट. स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है. एंड ऑफ द डे इट शुड मेक मनी फॉर यू. इट शुड हेल्प यू सर्व योर इन्वेस्टमेंट और योर ट्रेडिंग गोल्स. एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी मेरी एक क्लोज फ्रेंड की. तो उनका स्ट्रैटेजी था कि निफ्टी वीकली में ही ऑप्शंस में वो ट्रेड करते हैं. उनका गोल रहता है कि हर हफ्ते में मुझे सिर्फ 15 पॉइंट बनाना है निफ्टी में. मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक लॉट के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको. सो 15 पॉइंट्स इज व्हाट आई टारगेट इन द निफ्टी फॉर 1 week. Now 15 points is after considering all the brokerages and all the expenses which the exchange takes from me. इसके बाद कुछ लॉसेस होंगे, कभी प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे, बट मेरा टारगेट है हर हफ्ते में सिर्फ 15 पॉइंट बनाने हैं. 4 हफ्ते में आप बनेंगे करीबन 45 to 50 पॉइंट्स नेट. तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑन एन एवरेज अगर कोई भी ऑप्शन आप डे ट्रेडिंग के लिए खरीदे तो एवरेज एक अज्यूम करके चलते हैं कि एक 150 रुपीज के ऑप्शन का प्रीमियम है. तो निफ्टी का लॉट बनता है 50 का. तो अगर आप 50 का लॉट का निफ्टी इन्वेस्ट करेंगे विद अ प्रीमियम ऑफ 150, एक रैंडम एवरेज प्राइस ले रहा हूँ, तो यार इन्वेस्टमेंट रफली फॉर 1 लॉट ऑफ निफ्टी इन द मार्केट वर्क्स आउट टू अराउंड 12 to 15,000. तो हर हफ्ते अगर आपने 750 रुपए बनाया ऑन दिस इन्वेस्टमेंट विच कीप्स ऑन बीइंग कांस्टेंट, तो एक महीने आपका आराम से 2 से 2000 के एवरेज पे आपका रिटर्न बनना चाहिए following this simple rule. Now, is it really tough to make just 15 points every week? We lose more than 50 points every day when things don't go right. Some days are really bright for us. We make 100 points, we make 70 points, but let's keep it as simple as 15 points. So, इनका एक स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लगा. स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था, कोई भी एनालिटिक्स हो, ये मेरा गोल था कि मुझे इतना पैसा बनाना है. प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ लोग बस ट्रेड लेते हैं एंड इन व्हेन इट गोज इन योर फेवर रुक जाते हैं. समटाइम्स दे बुक प्रॉफिट्स ऑफ 25, 30, 50 पॉइंट्स, और जब ये गलत पड़ जाता है तो पूरा दिन रुक जाते हैं. मे बी दे कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. तो द होल आइडिया हियर इज प्लान रहना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव अ गेम प्लान, इफ यू हैव अ स्ट्रेटेजी कि मुझे कैसे करना है, कैसे इस दिन को फेस करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो आधे आपके जो प्रॉब्लम है आसान हो जाते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, this is the key level. That is the first point which we look at. अभी जो है डेट ऑल अबाउट लेवल्स. हमको जानना जरूरी है कि कौन से वो पॉइंट है जहां पे बाजार अगर गिर रहा है तो सपोर्ट ले सकता है, कौन सा वो लेवल है ऊपर की तरफ जहां पे वो अटके तो वो थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है. तो जो हमारा रेडी रेकनर रिपोर्ट है जो प्री मार्केट है उसमें हम आपको 4 लेवल देते हैं बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में. तो ये आपका काम तो और आसान हो गया, आपके पास लेवल है. तो अब आप पूछेंगे मुझे कि एग्जैक्टली ये लेवल पे आके मुझे खरीद लेना है कि टच हो गया तो मैं खरीद लूं इसको. मैं कहूंगा ना, लेट्स वेट फॉर 5, 10, 15 मिनट्स. लेट्स टेक 15 मिनट्स ऑन एवरेज. कोई भी लेवल सपोज बाजार गिरे या गैप अप गैप डाउन हो या गैप अप हो, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट दीजिए उसको. देख लीजिए कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमने रिपोर्ट में मेंशन किए वहां पे क्या ट्रैक्शन है प्राइसेस का. अगर सपोर्ट पे है तो बाजार कुछ उछाल करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं सपोर्ट पे. व्हेन इट टेस्ट द रेजिस्टेंस, is it trying to kind of hold on to the resistance barrier and see some selling?
Once you are clear in on this, you can immediately enter the trade. So when the prices bounce on a 15-minute chart from support, that is your buy position, your stop loss is below the support, and your target will be R1. Or if you are not keeping a target as an R1, you can keep an arbitrary target like the simple 15-point golden rule or the 20-point golden rule, which I just discussed at the beginning of the video. So that is how you simply move with the market. बी वेरी फ्लेक्सिबल इन ट्रेडिंग. इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे. प्रॉब्लम है कि हम बहुत लोग एक ही ट्रेड लेके पूरा दिन बैठ जाते हैं. See, intraday you have to be very flexible. Sometimes things don't go your way. Immediately move out of the trade. कोई हानिकारक चीज नहीं है ये. एक बार गलत पड़ गए, तुरंत निकल गए. वापस अगर आपको लग रहा है कि वही ट्रेड लेना चाहिए, वापस ले लीजिए. क्या होगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ब्रोकर कमा लेगा उसमें, पर क्या दिक्कत है? यू आर एमिंग फॉर द बिगर. लुक एट द बिगर पिक्चर. So that is what I would recommend it to you. So once you are clear on the supports and the resistance points for the day, you can also look at some other important points like a moving average. So जैसे 50-day moving average है, 200-day moving average है. This is one point which is widely followed by the market. ये रोज आपको दिखेंगे नहीं, पर जब भी आए तो इस पे आप ध्यान से नजर रख सकते हैं. अभी कोई पूछेगा कि अगर मेरा सपोर्ट लेवल टेस्ट हुआ ही नहीं तो मैं करूं क्या? तो उसके लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल है. सपोज सपोर्ट लेवल टेस्ट हुआ नहीं तो दिन का आपको एक 15 से 20 मिनट आपको रुकना है सिंस द ओपनिंग. और फर्स्ट half an hour candle के जिस breaks the upper side of the first half an hour range, then it's a buy. If it breaks the lower half 30-minute band of the prices, it's a sell. As simple as it. This is a simple trend following rule which is devised in technical analytics. It's a no-brainer, and trust me, with my 18 years of experience, I can tell you this simple no-brainer technique has almost a strike rate of over 70%. And you do not have to just buy it and hold it for the day end. You have a target in place. You can have a 20-point target, 15-point target, or you can ride the momentum raising your stops. You are free to do as you wish. At the end of the day, the whole idea is whatever your investment goal is or your trading goal is, it should be realized. Next is how the FIIs are positioned in the market. अभी इसमें अगर देखेंगे FIIs को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, FII money is hot money. FIIs dominate the market for short term trading. फ्यूचर्स मार्केट जो है पूरा लेवरेज का बिजनेस है. लेवरेज माने तो आप 100 रुपए रखिए और काम कीजिए 1000 रुपए में. आप जब भी फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं, आप पूरा पैसा नहीं भरते. यू ओनली कीप अ मार्जिन और अ डिपॉजिट ऑफ, let's say for Nifty, you keep a deposit of 1 lakh with the exchange, and you trade for a total contract of around 8 to 9 lakhs. So when an FII takes a position in the index, they are also very flexible. They are not going to hold this position for eternity. कैश में वो पोजीशन बना के रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. पर अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो इट इज मोर फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन. गलत पड़ गए तो एफआई तुरंत अपना पोजीशंस लिक्विडेट कर देंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है. तो बी विद द फ्लो, बी विद द बिग बॉयज ऑफ दिस गेम, एंड फॉर दिस यू हैव टू फॉलो द एफआई पोजीशनिंग. तो यहाँ पे जो एक एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स है, ये हमारा एक डेली रिपोर्ट है विच वी रिलीज अगेन प्री मार्केट. You can find this in your WhatsApp, your mailbox, or most of our Twitter handles. So what you have to see here is how the FIIs have been positioned for in the totality. So when you look at totality here, this is the long-short ratio. What I mean by a long-short ratio is total कितना positions open interest में long की तरफ है FIIs का, और कितना total open interest short की तरफ है. अभी ये तो हुआ पूरा entire picture of the FIIs. Does this help in day trading? Maybe or maybe not. It helps you on the broader positioning for the entire month. But if you zoom down further and you compare day over day comparison of how the FIIs are positioning, आज के दिन में आप देखेंगे तो एक्सचेंज आपको इतना डिटेल में ब्रेकअप दे रहा है कि निफ्टी में कितना पोजिशनिंग है, बैंक निफ्टी में कितना है, इसका डिटेल में आपको ब्रेकअप दे रहा है. तो अगर आप सिंपल सा, अगर ये एक मैं ये कल के डेटा में आपके सामने रखा हूँ, ये 14 जून का डेटा है विच वाज अ कंपैरिजन ऑफ द प्रायर डे. आप क्लियरली देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा सा जो है एक सेलिंग प्रेशर था. अगर आप निफ्टी में देखेंगे
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी थी। नेट अगर आप फिगर देखेंगे तो ये बुलिश फिगर है। तो जो डे ऑन डे कंपैरिजन था, अगर आप देखते ये रिपोर्ट में, तो 757 करोर्स की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर में थी एफआईआई की। शॉर्ट्स दिखे थोड़े बैंक निफ्टी में और लॉन्ग्स दिखे थोड़े निफ्टी में, थोड़े नहीं काफी ज्यादा, 906 करोड़। और नेट अपना पोजीशन आया बाइंग की तरफ। व्हेनेवर you see this data, I am clear index. I am not going to look at bank nifty index at least for the day. तो अगर निफ्टी में मेरा कंफर्मेशन आता है बाय, तो दिस इज माय फर्स्ट कंफर्मेशन कि आज मुझे निफ्टी में बाय की तरफ नजर रखना है। वेयर आई विल बाय, देयर आई विल बाय ऑन अ डिप एट सपोर्ट 0.1। सपोर्ट आ ही नहीं रहा है और ऊपर ही चल गया बाजार, देन व्हाट आई विल डू, फर्स्ट 30 मिनट का गोल्डन रूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, फर्स्ट 30 मिनट का ब्रेकआउट जिस तरफ भी हो जा रहा है, अगर हाई की तरफ 30 मिनट तोड़ता है और लो की तरफ, अगर लो की तरफ तोड़ा और बाय का नंबर है, तो लेट्स कीप इट कूल फॉर द डे। थोड़ा रुकना जरूरी है, सपोर्ट के लिए वेट कर लेंगे जो हमारा S1 है। अगर नहीं आ रहा है वहां पे और 30 मिनट रूल के हिसाब से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, तुरंत ट्रेड ले लीजिए। योर स्टॉप लॉस विल बी द लोअर बैंड ऑफ द 30 मिनट एंड जस्ट राइड ऑन टू द ट्रेड। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 2:1 होना जरूरी नहीं है। वी आर डे ट्रेडिंग, सो अपना जो ट्रेडिंग गोल है वो रियलाइज होना इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 पॉइंट भी अगर पर डे बन गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेट अगर मैंने जैसे बनाया, एक गेम प्लान होना जरूरी है। कुछ दिन आपके हिसाब से नहीं चलेंगे और पूरा हफ्ता अपने को देखना है, इसमें अपने टारगेट रखना है कि मैं कितना पॉइंट बना के मेरा ट्रेडिंग गोल इसमें सर्व हो रहा है। नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द एक्टिविटी ऑफ द ऑप्शंस, नाउ ऑप्शन चेन जो है ये हमें एक्सचेंज के वेबसाइट पे डिस्प्ले होती है। तो कुछ वेबसाइट्स आपको डायरेक्टली प्लॉट करके देते हैं ऑप्शन चेन का एक्टिविटी, या कुछ आप अगर एनएससी में ऑप्शन चेन दिख जाएगा कि टोटल कॉल्स और पुट्स में किस तरफ से ओपन इंटरेस्ट का प्लेसमेंट हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग, तो अपने को मंथली कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा फिलहाल वी विल कीप इट असाइड। So weekly contract में we have to see which is the strike which has the highest open interest positioning in puts, which is the strike which has the highest open interest positioning in calls. Normally एक assumption लेके चलते हैं हम कि जहां पे highest open interest है वो strike है जहां पे option writers है। अभी जैसे हमारे कुछ पहले 2 वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि ऑप्शन राइटर्स जो है ये सुपर एचएनआईज करते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट आपका रिटर्न कम रहता है बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। एंड नॉर्मली दीज ट्रेड्स आर डन बाय सुपर एचएनआईज बिकॉज वो मार्जिन रखना पसंद नहीं करते, दे आर यूटिलाइजिंग दिस मार्जिन अगेंस्ट देयर balances in their demat or against the money which is lying in against their portfolio. So it is about generating a constant return by option selling for these HNI customers. So what we have to understand here as a buyer in option is, since we are not talking at all about selling options, we are only looking at buying options, which is the strike which is drawing the highest open interest. So if you look at this chart in front of you, जो थोड़ा सा एक घोस्ट इमेज दिख रहा है आपको, ये है the highest open interest and this is right now for the 29 जून एक्सपायरी। ये एक सैंपल है इसलिए मैंने 29 जून का एक्सपायरी आपके पास आपके सामने रखा है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 18,500 18,500 के स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स में है। इसका मतलब होता है कि पुट राइटर्स जो है, जो एचएनआईज है, दे आर प्रिफरिंग टू राइट 18,500 फॉर द मंथली एक्सपायरी। उनका ये मानना है कि 18,500 के नीचे निफ्टी जाएगा ही नहीं फॉर द मंथ ऑफ जून। दैट इज द रीजन दे आर राइटिंग पुट्स। इन कॉल्स इफ यू सी द हाईएस्ट स्ट्राइक व्हिच ड्रॉज द ओपन इंटरेस्ट इज 19,000। तो इसका मतलब निकलता है कि जो अपसाइड तक देख रहे हैं मार्केट में जून के लिए, वो बनता है टारगेट अपना 19,000 तक, और दैट इज द एरिया वेयर the HNIs are writing calls और they feel कि वहां पे एक strong resistance बनेगा बाजार में, and that is the point where Nifty will hold for the month of June. Now for day trading, what you have to look at is how the trading activity is going on at the strike where the Nifty is trading. So I will take you through this once I finish this case study, because this is very important. So once you know the band for the Nifty की
पूरा हफ्ते में कौन सा बैंड है। अगर आप 22 तारीख का एक्सपायरी का बैंड देखेंगे तो 18,700 का लोअर एंड का सपोर्ट था, आज जब भी सुबह दिन चालू हुआ 18,800 पे काफी कॉल राइटिंग थी, एंड दीज कॉल राइटर्स हैव ग्रेजुअली शिफ्टेड टुडे फ्रॉम 18,800 टू 19,000. So 18,700 to 18,900 is the range which is applicable for the Nifty for the coming week. Now, if you look at this case study, my point which I want to draw to your attention is एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमने देखा था कि जब भी कोई स्ट्राइक जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, वो स्ट्राइक कभी कभी निफ्टी पार कर जाती है, तो दैट कैन बी माय सपोर्ट स्ट्राइक और दैट कैन बी माय रेजिस्टेंस स्ट्राइक। पर फिर भी स्ट्राइक क्रॉस करने के बाद भी वो जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें शेडिंग दिखने को नहीं मिलती। दैट इज वन ऑफ द क्लासिकल सिग्नल्स in derivative analytics where you can predict a reversal point in the market. तो ये बहुत सारा टाइम दिखने को मिलता है। अगर आप ये देखेंगे, ये आपको केस स्टडी सामने रखा है 11 अक्टूबर 2022 के लिए। तभी एक सिनारियो बना था जब भी निफ्टी काफी मंदी में चल रही थी, 17,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में। तभी 3 वीकली एक्सपायरी ओपन थे 13, 28 एंड 27 ऑफ अक्टूबर। निफ्टी 17,000 के नीचे 2 से 3 सेशन तक चला। एज आई रिकॉल वेरी क्लियरली, निफ्टी थोड़ा पैनिक करा निफ्टी ने, तभी इट वेंट टिल 16,800, 16,850, बट स्टिल इफ यू लुक एट हाउ द पुट राइटर्स एट द 17,000 स्ट्राइक वर रिएक्टिंग, they did not shed their put writing to open interest. So it was a classical indication that भाव मेरे स्ट्राइक के नीचे चल रहा है, फिर भी पुट राइटर्स जो है they are not shying away from their writing bets. They are not scared in exiting or unwinding their positions. So इसका मतलब वही निकल रहा था तभी कि if put writers are not unwinding, there is a good chance that market might see a temporary base and it may reverse. So वही चीज हुआ। 1-2 दिन के बाद तुरंत वापस मार्केट ने एक रिवर्सल मारा, वहां से 17,000 के वापस निफ्टी ने रिवर्स मारा, और वहां से जो हुआ हिस्ट्री था, निफ्टी ने वापस कभी वो देखा नहीं लेवल, वहां से अच्छा रिवर्स मारा और वहां से मार्केट चलता गया। So I'm not saying this is a point which will help you to predict long-term reversals, but this would be an excellent trade setup whenever you get such situations where the prices cross the highest open interest support or resistance bars. Now in Nifty daily analysis, we saw what the groundwork is. हमने सबसे पहले एक गेम प्लान बनाया, हमने एक स्टडी किया कि एफआईआईस की पोजीशनिंग क्या है, कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट में, ये चीजें हमने देख ली। एक बार डेरिवेटिव्स डेटा से सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है, नहीं है तो अपने रेडी रेकनर का प्रिंट आउट लेके आप अभी 9:15 बजे मार्केट के सामने बैठ गए तुरंत। नाउ हाउ यू फेस द मार्केट वंस इट स्टार्ट्स। पहले 15 मिनट में बहुत सारा ट्रेड्स जो है सिस्टम में लोग एंशियस रहते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर गैप अप हो तो सबको बाय करने का होता है, गैप डाउन हो तो बहुत लोगों को सेल करने का होता है, सम आर पैनिकी, सम वांट टू शॉर्ट सेल द मार्केट। सो द फर्स्ट 15 minutes is where all the noise is in the market. This is the time which is only for pros. It is the time for algos to work at its best. So I would suggest for all our participants, let the dust settle. थोड़ा सा शांति होने देते भाव में, चल गया बाजार कोई बात नहीं, पूरा दिन अपने पास करीबन पूरा 3:30 तक टाइम बचता है, 15 से आधा घंटा अगर मिस हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 पॉइंट भी मिस हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। इन जस्ट कैप्चरिंग दैट मोमेंटम, अर्ली मोमेंटम, देयर इज अ वेरी गुड चांस मेनी टाइम्स ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड इन दिस फर्स्ट 15 to 30 minutes. So my observation is let's wait for the dust to settle. Second, ऑप्शन चेन देखिए, check the open interest activity of at the money strike in option chain and check for the OI PCR activity. Now here I would just like to kind of share the activity when we look at the open interest. I would share a small activity with you. Just give me a minute. So if you look at how the open interest is positioned, now if you look at the total, you have to first see where the spot is. So I'm not getting the screen right now, but just a minute. Yeah. So if you look at this is a Nifty chart right now, and as I understand right now, we are at 18,830, 840, just 40-50 points from the all-time high. Now
the option chains would look something like this on the NSE website. अगर आपको पता नहीं कहाँ देखना है, तो just Google option chain NSE, just click on it. आपको एक पूरा एक पेज मिलेगा जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स रहेंगे, राइट हैंड साइड में पुट्स रहेंगे. दिस इज नॉट द NSE वेबसाइट, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. What you have to see is where the Nifty is. So in the live market example, it is at 18,930. Now all you have to do is go to 18,900 strike in option. See the open interest of Nifty at 18,900. See the open interest of 18,900 in puts. Clearly अगर आप देखेंगे open interest call की तरफ 1,03,994 है. पुट्स में आपका है अराउंड, अगर आप ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखेंगे इसमें तो 55,440 है. तो ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स इज डबल दैट ऑफ पुट्स, राइट? एंड स्टिल वी हैव अ लॉन्ग टाइम टू गो फॉर द एक्सपायरी. सो जस्ट अ मिनट, बैटरी जा रहा है. So what you have to look at is how the open interest positioning at the money strike. So highest open interest at a particular strike means वहां पे call buy हो रहा है, right? So that is a very good indication for you that call में buying हो रहा है और put में open interest कम है. Similarly अगर आप puts में देखेंगे तो highest open interest है आधा है इसका, तो इसका मतलब है put में ज्यादा buying हो नहीं रहा है इसमें. So this is how you interpret the market on basis of the open interest rates. Yeah. Welcome back, Akshay. Yeah. So yeah, welcome back. Yes. So apologies to all the viewers. There was some technical glitch at my end, because of which we could not, had to take a small break. So if you look at the next slide, we were here, right? So all this data which I spoke of is all readily available to you in our reports. Ready Reckoner है, FIR stats report है, सब available है आपके पास. All you have to do is just keep it ready before the market opens. Follow the golden rules which I have given you, and I believe it's not a tough job trading the Nifty. Flexibility, emotional psychology manage karna, that is what matters a lot. That is the reason if you see today, there is a lot of talk about bots, AI going ahead. But I should see, if you have a strategy in mind, game plan, all the data, we have armed you with all the necessary set of information, which is good enough, an eagle eye approach to see and trade the Nifty with confidence. This is what we give you at JMFL. And I think all the points which I have covered today in my presentation should equip you well to trade Nifty with confidence and help you achieve all your trading goals. So I think it's an eagle eye approach. It's a short seminar. As I said, I'm not going to confuse you too much. I'm more open to questions and talk about reality of the markets. So if Abhishek, you can start with the question and answer session. Thank you, Akshay, for this insightful session. We have a couple of questions. So how we can use option chain to make daily profits? Yes. So see, in the option chain, what you have to look at is, see, first 15th half an hour is what you have to do nothing. Don't place any trades, as I said in my presentation. Wherever the Nifty is, the spot price, just look at the total change in open interest at that strike in calls. Look at the total change in open interest inputs. Whichever is higher, it means that is the strike, that is the side which the market is looking at. Many a times क्या होता है कि बाजार एक बार फट से गिर जाता है, थोड़ा सा सेलिंग आ जाता है, पर अगर आप चेन रिफ्रेश करेंगे, इट इज रिफ्रेश्ड एवरी 2 to 3 minutes. अब तुरंत ऑप्शन चेन में देख लेंगे कि कॉल का पल्ला जो है भारी है कंपेयर टू पुट्स. द ओपन इंटरेस्ट इज higher in calls. So that's a very classical indication that people are buying for intraday at that point. So once you know that open interest in a certain strike is going up compared to its peer, that's the other call hai to put mein call mein zyada hai compared to put. All you have to do is just use basic technical indicators to see where I need to time this market. For the technical indicators I mentioned is, you can look at supports, resistance, pivot points hai,
Basic technicals अगर आपको आता है तो it's good enough. If not, you can always refer to our ready reckoner reports. But this is a very good tool to start off your day trading. Okay. So another one was how much idle profit can one remove by trading in options daily? So see, the journey of trading in options is something which you look collectively, right? Daily trading is a stressful job. You can consider it as a business, you can consider it as a full-time profession, because daily trading you need to be in front of the screen whole day. It's no messing around with the market. Let me tell you, the best minds of the industry are there to capture the smallest of the profits in the market. So just imagine you are competing with the best in the market, you're competing with the bots in the market, the artificial intelligence system in the market. So winning is not about winning the day, it is about winning in totality. So make a goal. As I said, it can be a week, it can be a fortnight, it can be a month. So assess yourself how you are faring on the deadline you have set. So if you're looking for a month, let's say your target is you want to make 50 points in Nifty by the month end after considering all the commissions and brokerages, right? That is your target. Now there will be off days, there will be days when you'll make money, but at the end of it, if you're able to achieve your trading goal, that's where you can say you are going on the right path. So whenever you enter the trade, have a target in mind, have a stop loss in mind, because it's not that sometimes you feel targets can go endless on certain days, and sometimes stop loss we wait till we get just out of money. So that's not how the way you trade. You have to be very flexible in trading. Even if you make 5 to 10 points every day, or maybe 1 week also, this goal can be achieved. 10 points is Nifty, is no big deal. It's as easy as it gets, as easy as it sounds, but when you practically trade it, it gets as difficult as it gets. I mean, I've summed up a lot of things here, but if you keep small targets and work on this, you shouldn't be looking at riding the entire rally on a single day. Be happy with what you get, keep your systems in place, and I think once your trading goal is achieved, that's what the best the market has to offer for you, and be happy with it. So however आपने गैप अप गैप डाउन के बारे में काफी हमको बताया, आप इस पे थोड़ा सा और बता सकते हैं कि हाउ टू यूज दिस गैप अप गैप डाउन रूल? So I'll give you a simple, example of a gap, looking at how we opened today, right? If you look at Nifty today itself, a live example today. अगर आज आप अपना जो हमारा डेली रिपोर्ट्स है रेडी रेकनर, अगर आप ओपन करेंगे आज, तो इसमें आपको S1 S2 मिलेंगे निफ्टी के. तो आज थोड़ा सा नरमी थी बाजार में, मॉर्निंग में थोड़ा सा एक वीकनेस, सॉफ्ट ओपनिंग थी बाजार में, 40 पॉइंट्स की थी. बट इफ यू लुक एट द सपोर्ट्स, I think we almost hit the supports, and that is the point from where we bounced. So in a gap down, you have to see S1 कहाँ पे है, S2 कहाँ पे है. अगर S1 पे बाजार 15 मिनट रुक रहा है और वहां से बाउंस हो रहा है आफ्टर अ गैप डाउन, दैट इज अ क्लासिक इंट्राडे बाय फॉर यू. सपोज गैप आ ही नहीं रहा है और just opened slightly up, you missed the support level and it's going up, follow the golden 30-minute rule. Let market break 30-minute range. Either if it breaks on the upside, good enough, take a buy trade immediately. If it breaks on the downside, then you obviously have to wait for your S1 to get triggered, and that is the point where you can buy the market. Same thing will apply for a gap up, major gap up opening in the market. So this is how you trade the markets. ओके, सो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल टिप और ट्रिक जो वो यूज करके डेली कुछ पैसा बना सकें या लॉस ज्यादा ना करें, कुछ भी जो आप अपनी तरफ से एक्सक्लूसिव टिप देना चाहें? So मैं वही बोलूंगा बार बार कि आप जब भी हो, don't go for maximum in this market, because market is all day trading is all about nibbling. Day trading is all about building your profits gradually. जैसे मैंने बोला, अगर आप सिंपल अगर 15 पॉइंट भी बना रहे हर हफ्ता, you are making 5% on month basis on the capital you invested. I just took an example of one lot. 5% 1 month is a very big return, trust me. And if you're going to compound it for the year, considering all the losses and all the other factors here, you're I'm telling you just about buying options. One lot, or as we speak about, you can always multiply this lot as per your trading capacity. So options may return wise
there is a very vast potential return to make. The only thing is, it is not like a stock where if you go wrong, you can just hold on and hang on to it. Most of the time, मेरा जो experience देख रहा हूँ, most retail participants जहाँ mistake करते हैं कि गलत पड़ गए तो they wait. Some people even go to extent of averaging options. Options कभी भी average नहीं करना चाहिए. By definition, options are depreciating assets. They should never be average. गलत पड़ गए, गलती मान जाओ, एग्जिट कर लो, तुरंत वापस ट्रेड लो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई उसमें हानि नहीं है. यू विल ऑलवेज बी विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, बी विद द मोमेंटम. दैट्स हाउ यू ट्रेड ऑप्शंस. Okay, thank you very much, Akshay, for taking out time today for today's session and sharing some very important insights with our viewers. And viewers, thank you for joining us today. I hope आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा. मार्केट से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you very much. Thank you all for having me on the show, and wish you best of happy trading and profits to come. Yeah. Thank you.